Let us start with today's class. Okay, so now let us proceed to step number 3. We are already on the 50% of the design. So let us go for the next 50%. And that is step number 2. We have to draw the optimum speed diagram. So what was that optimum diagram which we have discussed? First one. First one. First one, like So can you tell me what was the structural formula for that? 2-1, 2-1 3-2. and 3-2. For this stage it was 3-2 and here it was 2-1. So I have to make that structural diagram again because that was the optimum one. So what does the step number 2F says? You have to draw optimum speed diagram. And optimum speed diagram will come from optimum structural diagram. That's why I have used only optimum structural diagram here. Now, what are our requirements? What are our requirements? So, what is the minimum speed which we are looking on to? 160 RPM. 160. So I will write it here. I will go into the increasing way. 160 is the basic speed down, and I have to touch 1000. Correct? Yes, sir. And in between, we have already found out these values. Yes, Sir, 160 के बाद 231. 160 के बाद क्या था? 231. Okay, 231. Then 333. 333. Okay, 333 or 334. 480. Then it will be 480. Then 693. 693. So this all are the speeds which we want. तो अभी ये जो input speed है वो क्या होगी? What should be the input speed? Okay, if this one, this is 480, what will be this speed? ये speed भी क्या रहेगी? On the second shaft, 480 रहेगी because it is on the same line. Similarly, if this is 333 on the right hand side, what will be this speed? On the middle shaft, 333 because it is on the same line. Now this point is at the center of 480 and 333, is it? Yes, sir. So now if you don't know the logic, you will say, sir, it is 333 plus 480 divided by 2. Will you take the average? अगर आपको गेयरिंग का कॉन्सेप्ट पता नहीं है और मैं आपको बोलूंगा, मैं आपको एक वैल्यू दे रहा हूँ 333, दूसरा वैल्यू दे रहा हूँ 480, what is the middle value? What you will do? Average, sir. Yes, you will just do the average. You will do 480 plus 333 divided by 2 and you will get some answer. But here, mind well, we are not using the simple arithmetic mean. What formula we used to calculate these values? कौन सा mean use किए थे हमने? Geometric mean. That means that speed in the center is not the actual average, it's the geometric mean. So what you have to do is, you have to find out this. We have one formula and that formula I will write it here. Log of, the formula is log of Ni, that is input speed, is equal to log of N3 plus log of phi divided by 2. So what is this? This gap, if you see, or the gaps which I have made, this is nothing but log of phi. The gap is log of phi. Now just you can see that this is my N1, this is N2, this is N3, N4, N5 and N6. Okay. Now can you tell me that if this is N3, this is also N3 on the same shaft? For number 4, this one? Yes, sir. Okay. So it should be something N3 plus. And because it is exactly at the half, I will write it as log of phi divided by 2. Okay. So now just apply your mind and tell me, if I don't want to use this formula, what is the other formula which I can use on the similar lines? N5 minus 5. N4 minus 5. No, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया. N4 Yes, by it should be N4 minus of log of phi by 2. Correct? So this I can write is equal to log of N4 minus log of phi divided by 2. So both the formulas you can use and you will get the same answer for log of Ni or input speed. Understood now? किसी को doubt? No. So I will just substitute. So it will be log of N3. N3 is 333 plus log of 5. So what was 5? 1.442 divided by 2. So can you tell me this answer? Log of Ni. What is log of Ni? Or directly tell me the value of Ni. I don't need the value of log Ni. Just give me the final value. What will be the value of input speed? Sir, 400.
400. Yes, 399, that's the correct answer, 477. 400. So Ni we got 400. So I will write here this Ni is 400 RPM. Okay. So this becomes my optimum speed diagram, जिसमें से हमको लाइट साइड पे पूरा मालूम था पहले से. जस्ट मैंने क्या किया, मेरी इनपुट स्पीड फाइंड कर लिया. व्हाट इज माय इनपुट स्पीड? नाउ लॉजिकली व्हाट कैन यू टेल मी? व्हाट इज दिस इनपुट स्पीड टेलिंग यू? क्या हो सकता है ये इनपुट स्पीड 400 क्या बता रहा है आपको? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म दैट दिस शुड बी द इनपुट स्पीड? Speed at gear 1. Speed at gear 1. I will write to correct you, not gear 1, at shaft 1. Shaft 1. Okay. Okay. हाँ sir. This was shaft. about shaft number 1, shaft number 2, and shaft number 3. So the input speed, that means the speed of shaft number 1 should be 400. Let us say instead of 400, I am keeping it 430. For example, instead of giving it as 400, I am keeping it as 430. So will I be able to get the speeds which are required to me? जो मेरे को चाहिए 160, 231, 333, मुझे मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा. नहीं मिलेगा ना. बिकॉज क्या होगा, देखो Right. अगर मुझे 400 से इस पॉइंट पे जाना है, मतलब यहाँ पर मुझे 481 लगेगा ही लगेगा. यस और नो? बिकॉज द स्पीड इज 481 हियर एट दिस पॉइंट. Yes sir. अब ये कब मिलेगा? जब ये मेरा 400 रहेगा तभी. अगर 400 से मैं कुछ भी डिविएट करता हूँ, आई विल नॉट बी एबल टू गेट दिस स्पीड ऑफ 481. और अगर 481 नहीं मिला तो आगे का तो सभी भूल जाओ. So one change in the input shaft speed will not give me any output speed. So that is the importance of calculating the input shaft. इसका मतलब मैं यूजर को क्या बोल रहा हूँ? What I am giving to the customer that whatever you do, I want for the mechanism to work perfectly. I want the speed at input shaft to be 400. Understood? Yes sir. In question, what was given? What was the motor speed? कस्टमर के पास मोटर कितने आरपीएम से घूम रही है? 1440 RPM. Correct. If you have observed the question carefully, the question I will repeat again. I will just read out for you. The question was, design a gearbox for a 6-speed output with the following specifications. The first specification was output speeds minimum is 160 and maximum is 1000. And the second specification he has given me that I have a motor with me which has a speed of 1440 RPM. Now my logical question will come into picture. If I connect the motor which is running at 1400 RPM to this shaft number 1, will it serve the purpose? Shaft number 1 पे अगर मैं डायरेक्ट वो मोटर लगा दिया 1400 RPM की या 1440 RPM की जो भी है, so will I get the desired speeds which I want? No. No, because I already explained to you that for getting this speeds which I have written, the input shaft speed should be how much? Input shaft 400. speed, that is the first shaft. कितना होना चाहिए? 400. 400. अब लिखा हुआ भी ना वहां पर. अब मेरे पास तो मोटर है 1440 की, मुझे चाहिए 400. क्या करना पड़ेगा? गियर लगाना पड़ेगा. करेक्ट. और ऑप्शन बताओ यार, तुमने वैसा पढ़ चुके हो. टॉम में पढ़े हो, मशीन डिजाइन 1 हो चुका है, मशीन डिजाइन 2 हो चुका है. I have one mechanism which is running at 1440 RPM and I want to reduce it to 400 RPM. तो क्या होना चाहिए बीच में इसके? क्या मैकेनिज्म लगाएंगे? तो गियर डायमीटर बढ़ा देंगे. गियर डायमीटर बढ़ा देंगे. किधर का? आउटपुट पे. आउटपुट पे. Okay, so you mean to say the motor output shaft you will put a big gear, correct? So that its speed is reduced. Is it what you want to say? Yes sir. ओके. और क्या तरीका हो सकता है? दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. और क्या तरीका हो सकता है? वी हैव स्टडीड मेनी थिंग्स फॉर रिडक्शन ऑफ स्पीड. और क्या? एक तो गियरिंग है, दूसरा कैन यू नॉट यूज बेल्ट एंड पुली ड्राइव? Yes sir. एक तरफ अगर मैंने पुली बड़ा रखा, दूसरी तरफ पुली छोटा कर दिया, तो विल इट नॉट अफेक्ट द स्पीड? Yes it will. यस. Yes. सो व्हाट वी हैव टू से टू द कस्टमर, ओके मैंने आपकी तरफ से डिजाइन कर दिया. देखो व्हाट विल बी माय स्टेटमेंट टू द कस्टमर हु इज आस्किंग मी दिस, दैट मेरे पास मोटर तो 1440 का है बट मुझे ये 6 स्पीड चाहिए. सो आई विल गिव टू द कस्टमर, देखो भाई मेरी डिजाइन ये है बट ये डिजाइन वर्क करने के लिए आपका इनपुट स्पीड होना चाहिए 400 और यही ऑप्टिमम है. तो व्हाट यू डू इज यू ट्राई टू मेंटेन इनपुट स्पीड ऑफ 400 आरपीएम. तब वो मुझे क्या पूछेगा? भाई मेरा मोटर का स्पीड तो 1440 है. ओके, सो I will mark it here. Okay, let me mark it here. So let us say this is the motor speed. I will write here NM, which is given to us as 1440. I have just marked it about 1000.
And what I will say him, your motor speed is 1440. Whatever you do in between, I want this speed to be reduced to 400 RPM. अब यहाँ पर आप gearing mechanism लगाओ या use belt mechanism, I don't bother, whatever you use, but I want my input to my gearbox should be 400 RPM. Understood? क्योंकि मुझे उसने टास्क क्या दिया है gearbox डिजाइन का, तो मैं gearbox डिजाइन करके दूंगा. अब ये बीच का जो पार्ट है उसके मोटर से इनपुट शाफ्ट में क्या आना चाहिए, हमारा काम यहाँ से चालू होता है. गियर बॉक्स, गियरिंग के अंदर का पार्ट, गियरिंग के बाहर तुम क्या कर रहे हो, दैट इज नॉट माय लुकआउट. डाउट है किसी को? नो डाउट सर. सो लेट अस प्रोसीड फर्दर. सो हियर इट इज गिवन इनपुट स्पीड टू गियर बॉक्स इज गिवन बाय द रिलेशन. एंड व्हाट इज दैट रिलेशन व्हिच आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर? log of ni is equal to log of, for this case it will be n3 plus log of pi by 2, or it can also be written as log ni is equal to log of n4 minus log of pi by 2. Okay, mind well, this is log of pi by 2. Log of pi divided by 2 है, log of pi by 2 नहीं है. Okay, it is not angle divided by 2, it is log of the entire angle divided by 2. So this is the actual thing. बहुत से लोग वहां भी मिस्टेक कर देते. Okay, the next step is this one, reduction ratio. अभी मैंने इतनी बड़ी कहानी सुनाया, ठीक है. वो कहानी क्या थी? अब जो हमारा कस्टमर है उसके पास मोटर कितने आरपीएम की घूम रही है? 440. 1440. मुझे कितना चाहिए? 400. तो हाँ भाई, मैं इतना काम कर सकता हूँ मेरे कस्टमर के लिए कि मैं उसको रिडक्शन रेशियो दे सकता हूँ. दैट द रिडक्शन रेशियो शुड बी हाउ मच? योर मोटर इज 1440, my requirement is 400, so how much reduction ratio you will be requiring is how much? 3.6. 3.6 approximately, 3.59 something आएगा, 3.6. ठीक है. So what is that? That is n motor divided by n of input. जो भी आपका मोटर का स्पीड है उसको इनपुट स्पीड से डिवाइड करो, यू विल गेट द रेशियो. अब मैं कस्टमर के लिए इतना सा काम कर दिया कि भाई देख मेरे को 400 चाहिए, तू कुछ भी कर, हाँ इतना मैं तेरे को बोल सकता हूँ कि रिडक्शन रेशियो 3.6 का लगेगा. अब तू उसमें गियर लगा रिडक्शन रेशियो 3.6 अचीव करने के लिए, या तू बेल्ट ड्राइव लगा या जो तेरे पास है वो लगा, बट द रिडक्शन रेशियो विल बी 3.6. नेक्स्ट स्टेप, नाउ वी आर गोइंग इनटू द स्टेप नंबर 3. छुपे रुस्तम सब खत्म हो गए. नाउ वी आर गोइंग इनटू एक्चुअल स्टेप नंबर 3, wherein we have to say, or we have to calculate the number of gear pairs. Okay, then in bracket what I have written depends on structural diagram. उसमें मैं पहले ही बोला था अगर स्ट्रक्चरल डायग्राम में कुछ डाउट है तो पूछ लो, बिकॉज अगर वो रॉन्ग बनाए तो आगे सब कुछ गड़बड़. Now how to calculate number of gear pairs? कितने गियर लगने वाले हैं? इतना बड़ा गियर बॉक्स बनाने के लिए, इतनी सारी स्पीड अचीव करने के लिए कितने गियर्स लगेंगे? So first thing which you have to see is this one, gear pairs at stage 1. Stage 1 मतलब ये वाला, ये this is my stage 1 and this is stage number 2. Now gear pairing, कितने गियर लग रहे हैं मुझे? अगर 2 स्पीड अचीव करना है तो कितने गियर लगेंगे? देखो ये स्टेज 1 से स्टेज 1 में कितनी स्पीड दिख रही है आपको? 1 and 2, करेक्ट. ये 2 ही स्पीड है. यस सर. तो कितने गियर लगेंगे? अगर 2 स्पीड अचीव करना है तो कितने गियर लगेंगे? नंबर ऑफ गियर्स 2. ओके, सो आई विल राइट इट हियर, नंबर ऑफ गियर pair I will require 2. ठीक है. Now similarly if I go to stage 2, stage 2 पे एक स्पीड से कितनी लाइन निकल रही है? 3. So that means I will require 3 number of gear pairs at stage 2. Simple क्या करो, जो नंबर whichever number is outside the bracket that will be your gear pairs at stage 1 and stage 2 respectively. तो यहाँ पर था 2. That's why I have written gear pair at stage 1 2, and here it was 3, so I have written gear pair at stage 2 is 3. कितना याद रहेगा? ये सिंपल है. The numbers which are outside the bracket corresponds to gear pairs at that particular stage. तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 3. So what are the total number of gear pairs which we require, including 1 and 2? Total number of gear pairs कितने हैं? 5. So see here I have written total number of gear pairs will be 2 plus 3, which is equal to 5. Then टोटल नंबर ऑफ गियर पेयर्स है. ये पेयर्स, पेयर का मतलब क्या होता है? 2. सो इफ द नंबर ऑफ गियर पेयर्स आर 5, हाउ मेनी नंबर ऑफ गियर्स आई विल रिक्वायर? 10. I will require 10 gears. That is
5 multiplied by 2. So to achieve 6 speeds, I require minimum 10 number of gears. अब वो gear का अंदर का mechanism क्या होगा, वो कैसे वर्क करेगा, which we will see in the next slide. अब number of gears 10 है, तो हर gear पे number of teeth क्या होंगे? What will be number of teeth on each gear? That we have to decide. Okay. So for that, I have the step number, or the last step number, that is step number 4, which says this: calculate number of teeth on each gear and draw gearbox layout. So this is my gearbox layout. It's just a rough gearbox layout. I'm not telling that it is the final one. Final we will draw later. This is a rough layout. अच्छा, ये मेरा gearbox बना दिया. कितने shaft थे हमारे पास? 3. So I will make 3 shafts. 1, 2, 3. Okay, there are 3 shafts. This is my input shaft. पहला वाला जो shaft है वो है मेरा input shaft, and this is my output shaft, जिसपे मुझे अपनी desired speed मिलेगी. Okay. Now input shaft. Again, what you have told to customer, what speed you want at the input shaft? 400. 400. Okay. So I will write it here. By default, I need 400. Now tell me, because this is shaft 1, how many gear pairs will be coming? Teacher ने decide किए. शाफ्ट 1 पे कितने गियर्स होंगे? गियर पेयर. अरे यहाँ पर लिख देता हूँ ना मैं, क्या लिखा था? 2, 1 and 3, 2. दिस वाज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. मैंने कुछ हिंट भी दिया ना. फर्स्ट स्टेप पे कितना होंगे? नंबर ऑफ गियर पेयर्स विल बी 2. द नंबर आउटसाइड द ब्रैकेट गिव्स यू द नंबर ऑफ गियर पेयर्स. So 2. So I will draw here 2 number of gear pairs. So I will write on here 1. So see what I have done. I have made 2 pairs. So let me name it. Let us say this is 1i and this is 2i, where I stands for input, and if I will write here O, 1 output and 2 output. अब shaft number 2 पे मेरे को कितने चाहिए? How many gear pair I want at shaft number 2? 3. 3. So I will make 3 here. देखो shaft 2 पे मैंने 3 बनाया. So I will name it as 3i, 4i and 5i. And similarly I will write 3 का output, 4 output and 5 output. So total number of gears, if you count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So by just juggling with the numbers, 1 को 3 के साथ connect करो, 1 के साथ 4 को connect करो, 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ, you will get the required speeds. ठीक है? So this is the conceptual gearbox layout. It is not the final one. I have just drawn the conceptual कि हमारा gearbox ऐसे दिखेगा. Now what is our task is to find out what will be the number of teeth on this gear, what will be number of teeth on this gear, and so on. So this will be my next task, to find out what will be the number of teeth on each gear. Okay, so we will continue it in the next class, but just one thing I want to ask to you. What can you tell about center distance between these 2 shafts and these 2 shafts? Is that the same? Diameter of gear. Correct. So can I write the diameter? देखो ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था मेरा. Can I write diameter of first input plus diameter of first output should be equal to diameter of 2 input plus diameter of 2 output? Can I write this? इसका कुछ तो डायमीटर होगा. ठीक है, इसका कुछ तो डायमीटर है. ये मैं गियर बना दिया इधर, ये गियर यहाँ पर बना दिया. इसका कुछ तो डायमीटर होगा. सो आई हैव रिटन डायमीटर ऑफ 1 इनपुट प्लस डायमीटर ऑफ 1 आउटपुट. क्या देगा ये मेरे को? दैट विल गिव मी दिस डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का. यस और नो? Yes, sir. नाउ टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी, मुझे यहाँ का और यहाँ का भी सेम चाहिए. अगर मेरे को सेंटर डिस्टेंस शाफ्ट का सेम रखना है तो मुझे ये दोनों भी सेम लगेगा. मतलब हाइट, Yes, this sir. height, let us say B, should be equal to A. Yes or no? To maintain Yes, the same center distance. Yes, So लेकिन what I am diameter writing change here is होता है ना, D1I plus D1O should be equal to यहाँ का जो भी डायमीटर होगा प्लस यहाँ का जो भी डायमीटर होगा. Is it correct now? Yes, Yes, sir. Okay. जब भी So शाफ्ट this- स्ट्रेट हो पाएगा. This was what that was the main thing. Very correctly said. Then only the shaft will remain straight. अगर straight नहीं चाहिए मुझे, inclined shaft लगाना है, then I can vary the distance. So what we say is our shaft is exactly straight attached, and because of that the center distance is same,
And because entire distance is same, it should satisfy this criteria. Are you with me? Yes, sir. We are. Okay. So on the same lines, can you tell me what should be the equation for this set? D3 D3I plus T3I D3 plus zero T3O is equal to is equal to D4I plus D4O D4O is is equal equal to to. D5I plus D5O. Is it correct? Okay. Yes, sir. Correct. Yes, That's sir. it. So with this concept, we will stop here and we will continue in the next class and we will complete the entire gearbox design.